Radhe Radhe children. Today we are supposed to study the second type of reaction, which is known as decomposition reaction. Decomposition reaction. Now, the word decomposition itself tells to decompose, that is to break. The meaning of decomposition is to break. मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक मूवी का नाम दिया है। तो अब हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं तलाक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने नाम दिया था विवाह, दैट इज व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने नाम दिया है तलाक। तलाक का मतलब होता है व्हेन सिंगल substance break to form two or more substance, then such type of reaction is known as decomposition reaction. कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस अगर ब्रेक होता है, टूटता है, और टूटने के बाद दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर फॉर्म होते हैं तो हम उस टाइप के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे विल टेक एन एग्जाम्पल, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वाटर H2O. See, when we pass electric current to water, it gets converted into hydrogen and oxygen. This is balanced reaction. वाटर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा. सो नाउ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकंड एग्जांपल, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट. Limestone, when you heat calcium carbonate, that is limestone, it gets break into calcium oxide and carbon dioxide. Limestone, or we can say it as calcium carbonate. This is calcium oxide and this is carbon डाइऑक्साइड. फिर से लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अनदर एग्जांपल दैट इज सिल्वर क्लोराइड. Silver chloride, when you pass sunlight to this, when sunlight is passed to silver chloride, it gets converted into silver and chlorine. It gets converted into silver and chlorine. So now this type of reaction is basically known as, see, we could write it as like this also. Fine. When sunlight is passed to silver chloride, it gets converted into silver and chlorine. So these are the three examples of decomposition reaction. फिर से decomposition reaction किसे बोलते हैं? When single substance break to form two or more substance, then such type of reaction is known as decomposition reaction. इसका नाम दिया हमने तलाक. एग्जाम्पल में वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सेम वे सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट पास करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. So these are the three examples by which we can understand about decomposition reaction. Now, if you remember, in previous type of reaction, we had written, that is
decomposition reaction give rise to one more type of reaction which is known as endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन गिव राइज टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक का मतलब था कि जहां पर एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी अगर रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, मगर जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उसे हम कहते हैं endothermic reaction. So the reaction in which energy is required, then such a type of reaction is known as endothermic reaction. Once again, the reaction in which energy is required is known as endothermic reaction. अगर आप पहले के 3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपने देखा होगा फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ा था. इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़ा था. सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमने हीट प्रोवाइड की थी. थर्ड रिएक्शन के अंदर हमने सनलाइट प्रोवाइड की. सो अगर हमें ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन करना है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट, हीट, लाइट, टेम्परेचर ऐसे कोई ना कोई फैक्टर्स वहां देने पड़ते हैं, उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं. दैट इज एनर्जी इज प्रोवाइडेड, then and then only endothermic reaction is possible. Now some more example of endothermic reaction which are very simple. That is, I told you, here I am writing your example what we have done. 1, 2 and 3. ये 1, 2 and 3 ये तीनों एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं. एंड मोर ओवर digestion of food and writing here, and digestion of food is also an example of decomposition reaction, or we can say it is an example of exothermic reaction.